Upakadamayam dadati swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuktavakamam Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sahajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Visakan Vitam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Namasute Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visamanasute Devi Ramani Hari Priya Vanchakartarubhyascha Kripa Sindhuvyeva Pajutanam Bhavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna Krishna oneself to approach a spiritual master. चार श्लोक एक व्यक्ति को तैयार करते हैं कि वो एक गुरु के पास कैसे जा सकते हैं। Text number 17. श्लोक संख्या 17। Shri Raju Vacha Jataitam Aishwaryam Mayam Dusaram Akitaramadi Taranchaja Suladiyo Maharasaidam Uchatam Shri Raju Vacha Tataitam Aishwaryam Mayam Dustaram Apitaramadi Tarantanja Stuladiyo Maharasaidam Uchatam Shri Raju Vacha Yathaitam Aishwarim Mayam Dustaram Kritatmabhihi Karantyanja Sthuladiyo Maharsha Idamucyatam Shri Raju Vacha Yathayam Aishwaryam Mayam Dustaram Charatmabhi Taranti Anja Stuladiyo Maharsam Idam Ucyatam Shri Raju Vacha Yathayam Aishwaryam Mayam Dustaram Kritatmabhi Tarantyascha Stuladiyo Maharsam Ucyatam Shri Raju Vacha Yathayam Aishwaryam Mayam Dustaram Kritatmabhi Taranti Anja Stuladiyo Maharsha Idam Ucyatam Mataji Shri Raju Vacha
श्रीराजोवाच यथैतामेश्वरीं मायां दुस्तरां कृतात्मभिः तरन्त्यञ्जः स्थूलियो महर्ष इदमुच्यताम् श्रीराजोवाच यथैतामेश्वरीं मायां दुस्तरां कृतात्मभिः तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम् श्रीराजोवाच यथैतामेश्वरीं मायां दुस्तरां कृतात्मभिः तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम् शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा शिवमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा शिव प्रभुपाद की जय। श्रीराजोवाच राजा निमि ने कहा यथा जिस तरह एतां यह ऐश्वर्यं श्री भगवान की माया को दुस्तरां दुर्लंघ्य अकृत आत्मभिः जो आत्म संयमी नहीं है उनके द्वारा तरंती पार कर जाते हैं अंजः आसानी से स्थूलधीयः भौतिकवादी आसक्ति के कारण जिनकी बुद्धि मंद पड़ चुकी हो ऐसे लोग महर्षि हे महर्षि इदम यह उच्चतां कृपया कहें। राजा निमि ने कहा हे महर्षि कृपया यह बतलाएं कि किस तरह एक मूर्ख भौतिकवादी भी आसानी से श्री भगवान की उस माया को पार कर सकता है जो उन लोगों के लिए सदैव दुर्लंघ्य होती है जिन्हें अपने ऊपर संयम नहीं होता। तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार स्थूल धिया उनका द्योतक है जो अज्ञान के कारण अपने आप को स्थूल भौतिक शरीर मानते हैं और प्रकृति के उन सूक्ष्म नियमों का विश्लेषण नहीं कर पाते जिनसे आत्मा माया के कारण देहांतरण करता है। श्री जीव गोस्वामी टीका करते हैं कि स्थूल धीयः उन तथाकथित पुण्य आत्माओं का भी सूचक है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भव्य धार्मिक अनुष्ठान रचते हैं किंतु श्री भगवान की प्रेममय सेवा करके भगवत धाम वापस जाने की तैयारी नहीं करते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार राजा निमि पहले से श्री भगवान के उन्नत भक्त थे, अतएव वे जानते थे कि श्री भगवान के चरण कमलों में शरण लेकर तथा उनकी शुद्ध भक्ति करके मनुष्य माया को पार कर सकता है। इसलिए राजा उन लोगों की हितार्थ प्रश्न पूछ रहे थे जो भ्रमवश अपने आप को महान पंडित समझते हैं किंतु वास्तव में भौतिकवादी सकाम कर्मों में लिप्त रहने के कारण माया में अधिकाधिक फंसते चले जाते हैं। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमर कोश से उदाहरण दिया है कि अकृत आत्मधि सूचक है अपूर्णत्व का, जिसका अर्थ होता है रिक्त जीवन वाला। हर जीव का नित्य संबंध परम पुरुष श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण को अपना सनातन स्वामी, घनिष्ठ मित्र, प्रिय संतान या माधुर्य प्रेम का लक्ष्य समझकर प्रेम किया जा सकता है। हाँ, ऐसे भावों को कभी भी सामान्य भौतिक भावावेशों के रूप में नहीं समझना चाहिए जो आध्यात्मिक रस या संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। हम भौतिक जगत में इन्हीं दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रसों का आस्वादन करने का यत्न करते हैं
किंतु ऐसे मनोभावों का लक्ष्य नश्वर भौतिक शरीर होता है जो प्रकृति के नियमों द्वारा बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इन प्रेममयी भावनाओं को परम पुरुष श्री कृष्ण के आध्यात्मिक शरीर की ओर लक्षित करना चाहिए, जो समस्त सौंदर्य तथा दिव्य आनंद के आगार हैं। जिसने अपने प्रेम को श्री कृष्ण की ओर उन्मुख करने की कला नहीं सीखी, वह अपूर्ण है, अर्थात उसका जीवन अंततः रिक्त है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जिसका जीवन अपूर्ण होता है, अर्थात जिसकी बुद्धि विस्तृत अनुभव के अभाव के कारण पंगु है, उसे भी मंदधीही कहा जा सकता है। शुद्ध वैष्णव राजा निमि इतने दयालु थे कि उन्होंने पूछा, भला पंगु बुद्धि वाले ऐसे लोग सरलता से माया को कैसे पार कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आध्यात्मिक मामलों में अत्यंत आलसी होते हैं। English translation and purport. To text 17. King Nimi said, "O great sage, please explain how even a foolish materialist can easily cross over the illusory energy of the Supreme Lord, which is always insurmountable for those who are not self-controlled." One prominent thing with pure devotees is their extreme compassion for other living entities. एक विलक्षण गुण जो शुद्ध भक्तों में होता है वो ये है कि उन्हें अन्य जीवों पर बहुत अधिक करुणा होती है। They are magnanimous. उनका हृदय बड़ा उदार होता है। Very much concerned about the welfare of others. और दूसरों की हित की उन्हें चिंता लगी रहती है। That is why they are extremely dear to the Lord. और इसी कारण से वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। King Nimi is not asking question for himself. महाराज निमि अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। His question about those who have no opportunity for Krishna consciousness. उनका प्रश्न उन लोगों के लिए है जिनके पास कृष्ण भक्ति करने का अवसर नहीं है। He said, उन्होंने कहा, Dushtaram akritat mibi taranti anjastula diyo. Akritat atmabi. Those who are not self-controlled. जो आत्मा संयमी नहीं है, Taranti. What is the process for them to cross over this insurmountable material existence? तो इस भौतिक सागर के पार कैसे जाएंगे? It is dushtaram. इसको पार करना बहुत मुश्किल है। Very, very difficult बहुत मुश्किल to cross over this ocean. इस भौतिक भाव सागर को पार करना। Prabhupada said, no matter how expert a swimmer one may be, you cannot cross ocean. प्रभुपाद जी ने कहा था, आप कितने भी अच्छा तैराकी क्यों न हो, आप समुद्र को पार नहीं कर सकते। So it is impossible. तो ये असंभव है। King Nimi is finding a solution. तो महाराज निमि यहाँ पर समाधान चाहते हैं। There must be a way. There must be a way for people in our situation to become purified. कोई तो तरीका होगा कि ऐसे लोग शुद्ध हो पाएं। Stula Diya. Persons whose intelligence is dull by materialistic attachment. वो लोग जिनकी बुद्धि मंद है, क्योंकि उनके हृदय में बहुत सारी भौतिक आसक्तियां हैं। They are not able to cross over this ocean.
Lord Chaitanya Mahaprabhu was speaking to Murari Gupta. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त से कह रहे थे. He told him, उन्होंने कहा, of course, he is speaking to us by using Murari Gupta. मुरारी गुप्त को माध्यम बनाकर वो हमें कह रहे हैं, Don't waste your time with karma and gyan. कर्म और ज्ञान के मार्ग पर अपना समय बर्बाद मत करो. It makes one's intelligence very dull. ये एक व्यक्ति की बुद्धि को जड़ बना देता है. There is no attraction to Krishna. उस कारण से कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं. Don't waste your time with this. इसलिए अपना समय मत बर्बाद करो. Go for bhakti. भक्ति करो. It makes one's intelligence very sharp. वो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है. One will develop attachment, attraction for Krishna. व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत कर लेता है. So, Nimi Maharaj is very, very kind. तो महाराज निमि अत्यंत दयालु हैं. He is finding a solution for us. वो हमारे लिए समाधान ढूंढ रहे हैं. Our Acharya, they gave commentary on Vishwanath Chakravarti, Sridhara Swami. They spoke about this word, Stula Diya. हमारा आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी, इन्होंने इस शब्द की व्याख्या की है, स्थूल दिया. Stula Diya indicates those who ignorantly identify themselves with a gross material body. स्थूल देह का अर्थ होता है जो मूर्तावश अपने आप को ये शरीर मानता है. And who are therefore unable to analyze the subtle laws of nature, और उस कारण से इस प्रकृति के सूक्ष्म नियम को वो समझ नहीं पाते. by which the soul transmigrates in illusion. वो नियम जिस कारण से आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होती है मोह के कारण. Jiva Goswami also comment on these words. जीव गोस्वामी ने भी परिभाषा की है. Pious persons who execute pompous religious ceremonies for material sense gratification, पुण्यवान व्यक्ति जो बड़े धार्मिक कार्यों का आडंबर करते हैं, trying to prepare themselves to go back home, back to Godhead, और कोशिश करते हैं कि वो भगवतान वापस चले जाएं, by engaging in the loving devotion and service of the Lord. श्री भगवान की प्रेममय सेवा करके. And Vishwanath Chakravarti said, King Nimi was already an advanced devotee of the Lord. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि राजा निमि बहुत उन्नत भक्त थे. And therefore he knew that one can cross over the illusory energy, Maya, और वो जानते थे कि व्यक्ति माया को पार कर सकता है by surrendering to the lotus feet of the Lord इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में शरण लेकर and pleasing him by pure devotional service. और उनको संतुष्ट करके शुद्ध भक्ति करके. One cannot please the Lord by karma and by gyan. कर्म और ज्ञान के द्वारा व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता. Because karma means this body. कर्म का अर्थ है ये शरीर. Every of our activities ends with the body. हम जो भी कार्य करते हैं वो शरीर बनाता है. Even the desire to go to heavenly planet is still within this material body. स्वर्ग में जाने की इच्छा भी शरीर ही देगी. And people do so many pious activities. लोग इतने सारे पुण्य कर्म करते हैं. What is the result? उसका परिणाम क्या है? To go to heaven. स्वर्ग जाना चाहते हैं. What is there in heaven? क्या है स्वर्ग में? Better sense gratification. ज्यादा अच्छा इंद्र तृप्ति. Not Godhead. भगवत भक्ति नहीं. People are going to heaven, they are not going for bhakti. स्वर्ग लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ भक्ति. They are going for better sense gratification. इंद्र तृप्ति करने के लिए जा रहे हैं. See, people are struggling very seriously in this material world. और आप देखते हो लोग यहाँ संसार में संघर्ष कर रहे हैं. What is our struggle for? इसलिए ये संघर्ष. We want to overcome the obstacles illusory energy present to us. हम संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान की जो माया शक्ति है उसको पार करना चाहते हैं. Why the material energy present obstacles? भौतिक शक्ति भगवान की बहुत सारी बाधाएं जीवन में लाती है. Our sinful sense desire for self gratification. और हमारा जो पाप में इच्छा है इंद्रिय तृप्ति करने का,
In the process of sense gratification, Krishna doesn't exist. तो जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है वहाँ पर कृष्ण की उपस्थिति नहीं हो पाती. It is centered within oneself. व्यक्ति केवल स्वयं में ही रमण करने की कोशिश करता है. Even those who are cultivating knowledge, वो लोग भी जो ज्ञान विकसित करना चाहते हैं, it is still within oneself. वो भी केवल खुद के लिए ही तो है. I am suffering in this material world. मैं इस संसार में दुख भोग रहा हूँ. Let me leave this material world. मुझे इस संसार को त्याग. Give us gross sense gratification. स्थूल इंद्रिय तृप्ति को त्याग करके for subtle sense gratification. सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति को स्वीकार. It's still within the body. फिर भी शरीर तो रहेगा. Therefore, इसलिए Krishnadas Kaviraj Goswami said they are all selfish people. श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये सभी लोग बड़े स्वार्थी हैं. The muktis and the siddhis, they are all selfish people. भुक्ति मुक्ति सिद्धि सभी के सभी स्वार्थी लोग हैं. Only Krishna Bhakta is free from selfishness. केवल कृष्ण भक्ति स्वार्थ से मुक्त होता है. Why? क्यों? Krishnadas Kaviraj Goswami said they have no material desires. कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं क्योंकि उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती. But they are not lazy people. लेकिन वो आलसी लोग नहीं होते. They are 100% engaged. वो 100% सेवा में लगे रहते हैं कार्य में. In trying to please the senses of Krishna. इसलिए भगवान की इंद्रियों को सुख पहुंचाने में. Materialistic people work very hard to please their body. भौतिकवादी व्यक्ति शरीर को सुखी रखने के लिए बहुत मेहनत The करता pure है. devotees also work very hard to please Krishna. और शुद्ध भक्त भी बहुत मेहनत करता है लेकिन कृष्ण को सुख देने के They are selfless. लिए, क्योंकि वो निस्वार्थ है. Therefore, they are satisfied and happy. और इसलिए वो हमेशा संतुष्ट और सुखी रहते हैं. The karmis and the jnanis are not happy कर्मी और ज्ञानी सुखी नहीं, because their endeavor is not to please Krishna. क्योंकि उनका प्रयास कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं. Therefore, they are called stula diya. इसलिए उनको स्थूल दिया कहा जाता है. They are very, very concerned. They are very concerned about sense gratification. उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति चाहिए. And then Vishwanath Chakravarti concluded it in the last paragraph of the purport. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, one whose life is empty can also be called Mandadi, or one whose intelligence is crippled by lack of broad experience. विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं जिसका जीवन अपूर्ण होता है अर्थात उसकी बुद्धि विस्तृत अनुभव के अभाव के कारण भंगु है, उसे भी मंदी ही कहा जा सकता है. Empty life. अपूर्ण जीवन. The whole material existence, पूरा का पूरा भौतिक अस्तित्व, the whole material experience, जो भी भौतिक अनुभव हमारा होता it है, is an empty life. अपूर्ण जीवन है. Srila Lord Sabdev, we call it a defeat. भगवान ऋषभदेव कहते हैं ये जीवन की हार है. Abodh jata, defeated life. हारा हुआ जीवन जीना. It's a useless life. और वो बेकार का जीवन है. Let all of us here take a very quick survey. हमें अपने जीवन का निरीक्षण करना चाहिए. Let us look our life very carefully. हमारे जीवन को करीब से देखना चाहिए. Look inside. अंदर की ओर झांकना चाहिए. Look inside our life. हमारे जीवन को देखना है. How wonderful is material life. क्या बहुत अच्छा है हमारा भौतिक जीवन. This material world. ये भौतिक संसार बहुत How wonderful it is. कितना अद्भुत है. Look very carefully. ध्यान से सोचिए, देखिए. How wonderful is material life. कितना अद्भुत है ये जीवन. Terrible frustration. घोर निराशा. Is it not? Anxiety from all directions. हर प्रकार की चिंताएं सभी दिशाओं से. Every single thing we put our energy into, the end will be frustration and anxiety. हर कार्य में जिसमें आप थोड़ी सी शक्ति भी लगाते हो अंत में चिंता ही मिलती है.
So Vishwanath Chakravarti Thakur said, this is empty life. विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं पूर्ण जीवन. We are cripple-minded people. Cripple-minded. हम मन बुद्धि हैं. One whose intelligence is crippled by lack of broad existence. King Nimi, a pure devotee, was so kind that he asked, how can such crippled-minded people cross over Maya in the easiest way possible? Since by nature they are very lazy in spiritual matters. राजा निमि ने दयालु होने के नाते एक प्रश्न पूछा, भला पंगु बुद्धि वाले ऐसे लोग सरलता से माया को कैसे पार कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आध्यात्मिक मामलों में अत्यंत आलसी होते हैं. Sri Prabhupada said, accepting the roles of male and female in human society, the conditioned souls unite in sexual relationships. Thus, they constantly make material endeavors to eliminate their unhappiness and unlimitedly increase their pleasure. But one should see that they inevitably achieve exactly the opposite result. In other words, their happiness inevitably vanishes. And as they grow older, their material discomfort increases. श्री प्रभु ने कहा, मानव समाज में नर तथा नारी की भूमिकाएं स्वीकार करते हुए बद्धजीव संभोग रत होते हैं. इस तरह वे अपने दुख के निवारणार्थ निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं. किंतु मनुष्य को यह देखना चाहिए कि उन्हें सदैव इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मिलता है. दूसरे शब्दों में उनका सुख निश्चित रूप से लुप्त हो जाता है और ज्यों-ज्यों वे बूढ़े होते जाते हैं, उनकी भौतिक असुविधाएं बढ़ती जाती हैं. The endeavor we make and the amount of pleasure we get from it doesn't make sense. जितना हम प्रयास करते हैं और बदले में जितना सुख मिलता है, वो बहुत कम है. The anxiety we get from it is more than the energy we put into or the pleasure we get from it. लेकिन उस प्रयास से जो चिंता मिलती है, वो उस प्रयास से कहीं गुना ज्यादा मिलती है. And the end result is that our body becomes weak and weaker and weaker, and all varieties of diseases will start to manifest. और उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? शरीर कमजोर होता जाता है और नाना प्रकार की बीमारियां उस शरीर में आ जाती हैं. Eye doesn't see. कैसा लग रहा है? Use eyeglass. ग्लास लगा के देखना पड़ता है, दिखता नहीं है. Appetite is gone. भूख नहीं लगती. Can't eat properly. अच्छे से खा नहीं सकते. Arthritis there for the joint pains. आर्थराइटिस की समस्या, जोड़ों में दर्द. Discomfort. परेशानियां. Varieties of discomfort. नाना प्रकार के शरीर में परेशानियां. So you have doctor for the eyes, you have doctor for ears, you have doctor for teeth, you have doctor for आंखों का डॉक्टर, कानों का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर. So we prepare ourselves to become the source of happiness for doctors. तो हम ऐसा जीवन जीकर बस अपने आप को तैयार करते हैं जिससे कि डॉक्टर लोग सुखी हो जाएं. Right? We visit them every day. हम उनको हर दिन जाते हैं दर्शन करने. Eye doctor, आंखों का डॉक्टर, ear doctor, कान का, tooth doctor, dentist, दांतों का, the stomach, पेट खराब हो the गया, pains. दर्द हो रहा है, Go to chemist. दुकान में जाओ. Varieties of drugs, varieties of. इतनी सारी दवाइयाँ. We patronize every day. और हम हर दिन जाएंगे. Can't sleep well in the night. रात को सो नहीं सकते. Insomnia, इंसोम्निया, sleeplessness. नींद नहीं आती. They do the anxiety. चिंता के कारण. Not because of bhakti.
इसलिए नहीं कि भक्ति बहुत कर रहे हैं। Bhakti make you sleep very sound. जो भक्ति करता है वो बड़े आराम से सोता है। So we should take to Bhakti. इसलिए भक्ति करना चाहिए। It is not a mistake we have made by coming to Krishna consciousness. It's not a mistake. It's the best thing we have ever done in our life. तो भक्ति करना, भक्ति में आना ये गलती नहीं है। ये हमारे जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन है कि भक्ति के प्रोसेस को स्वीकार करें। Wealth is a perpetual source of distress. It is most difficult to acquire, and it is virtual death for the soul. What satisfaction does one actually gain from his wealth? Similarly, how can one gain ultimate or permanent happiness from one's so-called home, children, relatives, and domestic animals, which are all maintained by one's hard-earned money? अगला श्लोक, संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है। इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है और एक तरह से आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है? इसी तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधीगण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, जो उसकी कठिन कमाई से पालित पोषित होते हैं? In the purport, it is said, one's present status of material pleasure, which is the result of one's previous work, will eventually be vanquished, first paragraph, by time. Similarly, first paragraph, although by executing pious activities, one will be elevated to a higher status of life in the next life, that future situation will also be vanquished. मनुष्य का वर्तमान भौतिक सुख, जो उसके पूर्व कर्म का फल होता है, समय के साथ नष्ट हो जाता है। इसी तरह भले ही पुण्य कर्म करने से कोई अगले जन्म में कुछ पद प्राप्त कर ले, किंतु यह भावी पद भी नष्ट हो जाएगा। I know so many wealthy people. मैं इतने धनी लोगों को जानता हूँ, they are extremely wealthy. जो बहुत धनी हैं, they don't pay their workers' salary. लेकिन वो अपने नौकरों को तनख्वाह नहीं देते। I know. मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। They don't pay their workers' salaries. वो अपने कर्मचारी को उनकी तनख्वाह नहीं देते। It is mentioned here, wealth is a perpetual source of distress. Perpetual source of distress, wealth. यहाँ बताया गया है कि धन जो है वो नित्य रूप से समस्या लाता है। We think that if I get money, I will be very happy. हम सोचते हैं कि पैसा मिलेगा तो बहुत सुखी हो जाएंगे। Billionaires are the happiest people in this world. तो क्या जो करोड़पति अरबपति लोग हैं वो सबसे सुखी हैं संसार में? Billionaires are the happiest people in this world. जो अरबपति लोग हैं क्या सुखी हैं सच में? सबसे ज़्यादा? No. And there is one of the heaviest world heaviest boxing champion. एक व्यक्ति था जो बॉक्सिंग चैंपियन था पूरे विश्व का। He is black. काले शरीर, काले रंग का शरीर। Muhammad Ali. मोहम्मद अली उसका नाम था। My spiritual master met him at Devotee. मेरे गुरु महाराज उनसे मिले थे। So one day he told my spiritual master, तो उन्होंने महाराज के गुरु महाराज से कहा, you know, when I was a small boy, आप जानते हो मैं एक छोटा बालक जब था, it's a black boy in America. अमेरिका देश में काला शरीर का, There so many people, so many things are denied of you. तो जो व्यक्ति का काला शरीर होता है अमेरिका देश में उसको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। So I was thinking,
मैं सोच रहा था how wonderful my life will be if I become a wealthy person. तो मैं सोचता था जब मैं धनी हो जाऊंगा तो मेरा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। Somehow or other, लेकिन by my karma, मेरे कर्म से I have gotten to the top. मुझे मिल भी गया, मैं ऊपर आ गया, सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। See, in this my palace, आप ये मेरा जो महल देख रहे हो, the furniture in this room is from Japan. फर्नीचर जापान का है। The one in that side is from Frankfurt. उस रूम में जो है वो फ्रैंकफर्ट से है। They are from different countries. अलग-अलग देशों से हैं। And if I press a button now, मैं यहाँ पर एक बटन दबाऊंगा, my girlfriend from different part of the world can come. Girlfriend from different part of the world. मेरे अलग-अलग संसार में अलग-अलग स्थानों में जो गर्लफ्रेंड जैसा आ जाएंगे। For fame, I have gotten it. Fame. I have gotten fame. हाँ, मुझे यश प्राप्त हो चुका है। I have money. धन है। I have power. शक्ति है। Prestige. यश है। Everything that is wonderful materially, I have gotten all. सब कुछ अच्छा है। But my friend, let me tell you, लेकिन मेरे मित्र मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I am not happy like you. मैं आपके जैसा सुखी नहीं हूँ। What is your secret? आपका वो सुख होने का रहस्य क्या है, राज क्या है? Gurudev said, महाराज ने कहा, the whole of my life, मेरे पूरे जीवन में my property मेरी संपत्ति inside this briefcase. इस ब्रीफकेस के अंदर रही है। I don't have the big house. मेरे पास बड़ा घर नहीं I don't have the money. धन नहीं, I don't have everything you have. मेरे पास वो सब कुछ नहीं जो तुम्हारे पास है, But they see me always smiling. लेकिन हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ And you are frustrated. और आप निराश बैठे रहते हो। Say, yes, what is your secret? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ राज क्या है इसका। Because of Krishna consciousness. कृष्णा भावना भावित होने के कारण My thinking is different. मेरी सोच अलग है, My vision is different. मेरा दृष्टिकोण अलग My है, activities are मेरा different. कार्य अलग है, Because of Krishna consciousness. कृष्णा भक्ति के कारण। So it is a proven fact तो ये प्रमाणित बात है that material things cannot make anyone happy. कि भौतिक वस्तुएं किसी को सुख नहीं दे सकती। Because we are not material. क्यों? क्योंकि हम भौतिक पदार्थ से नहीं We are बने, spiritual beings हम आध्यात्मिक जीव हैं, undergoing material experience. लेकिन हम भी भौतिक अनुभव से गुजर रहे हैं। So, इसलिए material world brings perpetual distress, not happiness. संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है। We cannot buy happiness with money. हम पैसे से सुख नहीं खरीद सकते। It is not in the supermarket. सुपरमार्केट में सुख नहीं मिलता है। It is Krishna's property. सुख कृष्ण की संपत्ति, It is what Krishna. कृष्ण के पास है And Krishna gives only to his devotees. और कृष्ण वो केवल अपने भक्तों को देता So है। only devotees will be happy केवल भक्ति सुखी हो सकता है because they are connected with the supreme happiest person. क्योंकि वो सबसे सुखी व्यक्ति से जुड़े हैं। Karma and Gyan make us dry. कर्म और ज्ञान जीवन को शुष्क बना She will देता not है be happy. और वो व्यक्ति खुश Will नहीं not रह be सकता, satisfied. संतुष्ट नहीं रह सकता। It is most difficult to acquire wealth. धन को प्राप्त करना बड़ा कठिन है So in this world we do so many sinful things to get money. और इस संसार में लोग न जाने कितना पाप कर्म करते हैं धन कमाने के लिए, Especially in Kali Yuga. विशेषकर कलयुग में। If you want to get money, अगर आपको धन चाहिए, it is by putting others in anxiety. दूसरों को चिंता में डालकर ही व्यक्ति धन प्राप्त करता है। To get money peacefully, very difficult. दूसरों के जीवन में परेशानी न डालकर उनको शांति देकर धन प्राप्त करना It बहुत is मुश्किल है। through duplicity. केवल धोखाधड़ी करके ही धन प्राप्त किया If जा you're सकता not duplicitous, you can't make money. है। अगर आप छल नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते, तो आप धन नहीं कमा सकते। That is material world, ये भौतिक जगत है, full of difficulties. बहुत कठिनाइयाँ हैं। And as we put others in anxiety और जैसे हम दूसरों को चिंता में डालते हैं to get the wealth, धन प्राप्त करने के लिए, we will also be placed in anxiety. हमें भी चिंता में रहेगी This is what is going on. और वही तो हो रहा है। And all conditioned souls are experiencing it. और भौतिक बद्धजीव इसी का अनुभव कर रहे हैं। Eventually, it will bring death.
और फिर अंततः क्या होगा? मृत्यु आ जाएगी। Everybody सबके will face it. सबको देखना पड़ेगा। So it is not a wonderful way. ये कोई बहुत अद्भुत तरीका नहीं है। In the 7th canto, 7वें स्कंद में Prahlad Maharaj, प्रहलाद महाराज he said the same thing. यही बात कहते हैं, What I desire, I never get. जो मैं चाहता हूँ कभी नहीं मिलता, What I don't want, that I get all the और time. जो मैं नहीं चाहता हूँ वही मिलता है। Is it not true? क्या ये सत्य बात नहीं है? Want pain, waist pain? किसी को चाहिए कमर दर्द, Do you want waist pain? चाहिए किसी को, No. But लेकिन that's what we get. Yeah? That's what we get. Right? That's what we get. What we want, you never get it. What you don't want, that is what we get. जो चाहिए नहीं मिलता, जो नहीं चाहिए वही मिलता है। That's material life. ये भौतिक जीवन है, It is not a wonderful life. ये कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं। So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद he confirmed it. वो कहते हैं, This place is not for devotees. वो कहते हैं ये संसार भक्तों के लिए नहीं है। Gentlemen cannot stay here peacefully. सज्जन व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक नहीं रह सकते। Therefore, इसलिए Maharaj Nimi महाराज जी is finding the way रास्ता ढूंढ रहे हैं, out of his compassion for us. करुणावश He's finding the way. रास्ता निकाल रहे हैं। My dear Narendra Modi, how can these people become liberated? मैं जानना चाहता हूँ कैसे इन लोगों को मुक्ति मिल सकती है। With all the clouds of anarthas in our head, varieties of clouds. जो बादल छाया हुआ है हमारी बुद्धि पर हमारे अनर्थों के कारण, How can we clear this cloud ये बादल कैसे हटेगा? to become a devotee? इससे क्या बात समझाएं? This is the concern of pure devotees. ये शुद्ध भक्तों की चिंता है, And they can go to any extent to find a way for us. और वो रास्ता ढूंढने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। As we are ready to do all kinds of sinful things to suffer, जैसे कि हम हमेशा तत्पर रहते हैं, पाप कर्म करेंगे और दुख भोगेंगे। the pure devotees are ready to do anything to free us from suffering. शुद्ध भक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है हमको बचाने के। Is it true? क्या ये सत्य बात है? Prabhupada almost died in the sea. Prabhupada श्री प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, going to America. he Almost died almost शरीर छोड़ चुके थे जब समुद्र से जा रहे थे in the sea. जहाज में। If he had died, अगर वो शरीर छोड़ दिए होते what would happen to his body? तो उनके शरीर को क्या होता? Throw inside the water. समुद्र में फेंक देते। His father is there. उनके पिताजी थे, His mother is there. माँ थी, The disciples are there. शिष्य थे, Who is there? कोई नहीं था। Nobody knows him. So if you leave the body there, throw it out. तो Finish. समुद्र में शरीर फेंक दिया जाता। But why did he take all this risk? लेकिन उन्होंने ये जोखिम क्यों उठाया? Srimati Morality told him, Swami ji, don't go there. You will die there. सुमति महाराज जी ने कहा, स्वामी जी मत जाइएगा, मर जाएंगे। Prabhupada said, let me go and die there. बाबा जी ने कहा, जाने दो और तो मर जाऊंगे तो भी चलेगा। Why? क्यों? The order of his spiritual master is on his head. गुरु की आज्ञा है मेरे सिर पर। But why is it on his head? लेकिन वो उनके सिर पर क्यों है? Because of compassion. करुणावश। He wants to help us. वो सहायता करना चाहते थे हमें। Atula Diyas. Atula Diyas. We are Atula Diyas. हम हैं उस स्थूल धी व्यक्ति। Prabhupada is concerned about us. प्रभुपाद जी को चिंता है हम लोगों की। We are hearing this from King Nimi हम ये महाराज नीमी से सुन रहे हैं because of Prabhupada. श्री प्रभुपाद जी के कारण। Who knows Srimad Bhagavatam? हम कौन जानता था श्रीमद् भागवतम? Nobody. कोई भी नहीं, Nobody. कोई भी नहीं। Even those who study it. जो पढ़ते हैं वो भी नहीं जानते, Speculate. केवल वो कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं। They study to speculate. केवल वो अनुमान करते हैं कि ये ऐसा होगा, Not to give bhakti. नहीं भक्ति नहीं करते, It is for speculation. केवल वो मन गढ़ धारणाएं बनाने के
एक प्रभुपाद जी, he gave the bhakti उन्होंने भक्ति दी, out of compassion. करुणा। This is the nature of pure devotees. ये शुद्ध भक्तों का स्वभाव होता है। If we devotee ask me how to follow Prabhupada, भक्त लोग हमसे पूछते हैं प्रभुपाद जी का अनुसरण कैसे किया, so we are discussing how to follow Prabhupada. कैसे उनके पश्चिम पर चला जाए। So Prabhupada has compassion. प्रभुपाद जी के हृदय में करुणा है। If we are followers of Prabhupada, अगर हम प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, we should also have compassion. हमारे हृदय में भी करुणा होनी चाहिए। How do we know we have compassion? हमें कैसे पता चलेगा कि हृदय में करुणा है? When we become restless, जब हम बड़े ही व्याकुल हो उठेंगे, seeing the material world in anxiety, जब हम देखेंगे लोग संसार में कितने कष्ट में हैं, चिंतित हैं, and want to give Krishna consciousness, और हम सोचेंगे हमें उन्हें कृष्ण भक्ति देनी है। that is following Prabhupada. इसको कहते हैं प्रभुपाद जी का। That is our credit. ये हमारा लाभ, हम ये हमारे लाभ के लिए होगा। As Maharaj Nimi is finding solutions, जैसे कि महाराज ने भी यहाँ समाधान ढूंढ रहे हैं, Prabhupada is showing the solution. प्रभुपाद जी समाधान दिखा रहे हैं, We have to follow that. हमें उसका अनुसरण करना है। That is our duty. ये हमारा कर्तव्य है। What satisfaction do we get from our children? हमें अपने बच्चों से, संतानों से क्या संतुष्टि होती है? Your son is in Japan. पुत्र जापान में, Your daughter is in London. पुत्री लंदन में, When you are leaving your body, जब शरीर छोड़ रहा होता है तब। is that satisfaction? Is that satisfaction? क्या ऐसा जीवन संतुष्टि वाला जीवन? We have a member in Nigeria, नाइजीरिया देश में हमारा एक संसार से जुड़ा मेंबर है, very wealthy. बहुत धनी। His children are all abroad. उसके सारे बच्चे दूर देशों में रहते हैं, And the father was very, very sick. और वो पिताजी बड़े बीमार पड़ गए। So they were informed. तो उनको बताया गया, सूचित किया You गया, better come and see him before he leaves. आके देख लो भाई मरने वाला है। The two children descended. दो बच्चे हैं, They didn't go to the house. घर नहीं गए, They went to the father's filling station, petrol station. वो पिताजी का जो पेट्रोल स्टेशन था वहाँ गए, They sold it. उसको बेच दिया। They have not reached the house to see their father who is going to die. घर नहीं पहुंचे पिताजी को देखने के लिए, उससे पहले पेट्रोल पंप जाकर वहाँ बेच They दिया, have already started selling the father's property. संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया, They sold the filling station. बेच दिया, They went to the company. और फिर कंपनी गए, They were negotiating. वहाँ जाकर भी चर्चा कर रहे थे कितना में दिया जाए, And when they got to the house, और जब वो घर पहुँचे, they were selling the cars in the compound. वो घर पहुँच कर भी गाड़ी बेचने लगे। Before the security raised alarm, जब वहाँ पे जो सिक्योरिटी था उन्होंने चलाया, their mother came down. माँ नीचे आई, They didn't greet her माँ को प्रणाम नहीं किया, because they were busy selling their father's property. वो तो बिजी थे ना पिताजी की संपत्ति बेचने में। Their mother was shocked. तो माँ बड़ी आश्चर्यचकित, These are my children? क्या ये मेरे बच्चे हैं? Yes, they are her children. हाँ बच्चे थे, They are her children. उसके बच्चे हैं। They didn't think of her. लेकिन वो उसके बारे में नहीं They were सोचे, selling the father's property. पिताजी की संपत्ति बेचने लगे। Is that happiness? तो ये ऐसा जीवन सुखमय जीवन है। Their mother was very happy. क्या उनकी माँ को बड़ा सुख मिला? She was happy? सुखी थी वो, No. खुश थी। No. The mother has to call police. That is the greeting. Has to go for police. माँ को पुलिस को बुलाना पड़ा। इस प्रकार स्वागत किया माँ ने। Material life. ये भौतिक जीवन है। Very pleasurable place.
बहुत ही आनंद उठाने वाला स्थान है। Very beautiful place. बहुत सुंदर स्थान है, Is it not? है कि नहीं? No. See, our philosophy is practical. हमारा जो विचार है, दर्शन है, बड़ा ही व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल। It's something we can identify with. जिसको हम बड़े आसानी से देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। So the children did not sleep in the house; they have to sleep in police station. तो उन बच्चों को घर पे नहीं, पुलिस थाने में सोना पड़ा। And the father is lying in the bed about to die. और पिताजी बिस्तर पर पड़े मरने वाले। Will he die peacefully? क्या वो शांति के साथ मरेंगे? शांतिपूर्ण। Worried about the behavior of the children, worried about the properties, worried about everything else. कितनी चिंता बच्चों की, उनके व्यवहार की, संपत्ति की, सब कुछ। So what was the purpose of his life? तो अब जीवन में किया क्या? फिर जीवन का क्या उद्देश्य रहा? Waste. Are we going to change or we're going to follow the same way? तो क्या हम भी वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं? या बदलना चाहते हैं अपने जीवन? I'm seeing many devotees giving up their body and anxiety also. मैं बहुत सारे भक्तों को देखा हूँ, वो भी अपना शरीर बड़ी चिंता की अवस्था में छोड़े हैं। Devotees, भक्त लोग भी they are dying मर रहे हैं, not happily. लेकिन सुख के साथ में, सुखपूर्वक नहीं। I'm talking about devotees now. मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ। Many devotees are dying बहुत से भक्त in a very distressful way. बड़े ही कष्टमयी अवस्था में, Angry. क्रोध हृदय में भरा पड़ा। With who? किससे? Because of what we are leaving behind. उसलिए क्योंकि हमने जो पहले किया है, जो हम छोड़ के जा रहे हैं। Is that Krishna consciousness? तो वो क्या वो कृष्ण भावनाभावित होना है? The devotees will die happily. एक भक्त को तो बड़े सुखी होकर मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए, शरीर छोड़ना चाहिए। Sweet. बहुत मधुर अनुभव होना चाहिए मृत्यु। His Holiness Radhana Maharaj, he was speaking about my spiritual master. वो मेरे गुरुदेव के बारे में बता रहे थे। When he went to meet him, जब उनसे मिलने के लिए गए, the Gurudev asked him to stay with him. महाराज ने उनसे निवेदन किया था अपने साथ So he can narrate Krishna pastimes. कि वो कृष्ण की कथाओं को सुना सके। So Radha Maharaj told us that one day तो ब्रह्मचर्य राधा महाराज बोले एक दिन he was narrating वो सुना रहे थे कृष्ण कथा, and he noticed that Gurudev was not listening और उन्होंने ये देखा कि महाराज सुन नहीं रहे because of the pain. दर्द के Pain, the कारण। pain was very intense. बहुत ही ज्यादा दर्द था। So he started chanting. तो उन्होंने जप करना शुरू किया। He stopped narration. उन्होंने पढ़ना बंद He किया started to chant. और जप करना शुरू किया। As he was chanting, और जैसे वो जप कर रहे थे, and he saw Gurudev, और उन्होंने देखा महाराज big को, smile. बहुत ही बड़ी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। And say, Maharaj, what's happening? बोले महाराज क्या हो रहा है? See, it cannot be better than this. तो बोले इससे बेहतर और कुछ नहीं हो It सकता। cannot be better than this. इससे बेहतर नहीं हो And I cannot go less than this. सकता। और मैं इससे नीचे या छोटे को स्वीकार नहीं करूंगा। That's Krishna consciousness. इसको कहते हैं कृष्ण भावना। Not giving up the body with anger. ऐसा नहीं शरीर छोड़ेंगे क्रोध अवस्था में, Means we didn't make it. मतलब वो वापस नहीं गए भगवान। If you make it, you'll be happy. अगर आप जा रहे हो भगवान के पास तो आप खुशी खुशी जाओगे। With such intense pain, शरीर में इतना कष्ट था, a person is feeling blissful. लेकिन उस व्यक्ति को सुख है, आनंद है। What is that? वो क्या है? Krishna consciousness. यही कृष्ण भावना भावित होना है। The pure devotees, they are expecting us. They are expecting all of us to practice our Krishna consciousness to this level. तो भगवान की जो शुद्ध भक्त है वो हमसे ये आशा रखते हैं कि हम भी कृष्ण भक्ति के इस स्तर पर पहुंचे, अभ्यास करें।
In some countries, like in South America, they are very fond of having pet animals. कुछ देशों में जैसे कि दक्षिण अमेरिका, वहाँ पे लोगों को पालतू जानवर रखना, पशु रखना बहुत अच्छा लगता है. Not cow. गाय नहीं रखते वो. Dogs. कुत्ता. According to Shastra, शास्त्र के अनुसार dogs are not allowed in holy places. कुत्तों को एक पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं है. So keeping dogs means तो कुत्तों को घर पे रखने का अर्थ है contamination. घर में अशुद्धि. So, but you are keeping. ये लोग तो रख रहे हैं. So, that consciousness will go back to your head. तो क्या उस चेतना से व्यक्ति भगवत धाम जाएगा? That is good consciousness. क्या ये भगवत चेतना है? So, what happiness in keeping the dogs? क्या सुख मिलता है कुत्तों को रखकर? It is frustration. केवल निराशा है जीवन में. The happiness we want from fellow men, women, which you are not getting from them, want to replace it with animals. जो मनुष्य से सुख नहीं मिल रहा है, उसी सुख को पशु से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. Is it not? It's a replacement for what we are not getting from fellow men, women. जो साथ में लोग रहते हैं, उनसे आदान प्रदान होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, तो हाँ एक पशु रख लेते हैं, इससे आदान प्रदान करेंगे. The dog is not going to envy you. कुत्ता तो आपसे ईर्ष्या कभी करेगा नहीं. Right? I will envy you. No, you have two shirts. मनुष्य तो आपके साथ रह रहा है, वो तो ईर्ष्या करेगा. आपके पास दो जोड़ी कपड़े हैं. The dog is not going to do that. कुत्ता तो नहीं करेगा. I better keep dog and not man. You. हाँ, तो इसलिए लोगों को छोड़ो, कुत्तों को. Dog, yeah. That will give us happiness. क्या इससे वास्तविक सुख मिल जाएगा? Satisfaction will come from that. संतुष्टि आएगी इससे. If we increase frustration, would it turn to happiness? अगर हमारी जीवन में निराशा बढ़ रही है, तो अचानक से सुख बन जाएगा. If we expand our frustration, will it eventually turn to happiness? ये सब कार्य अपने निराशा को विस्तार करने के हैं. इससे सुख नहीं मिलेगा. Better to rectify our situation. Rectification. बेहतर है कि हम अपनी परिस्थिति को सुधारें. We maintain all these animals with our hard-earned money to keep dogs. हम इन पशुओं को पालने के लिए इतना जो मेहनत से कमाया हुआ धन है वो लगाते हैं. They also pay for them when they travel with them in a plane. कुत्तों को फ्लाइट में घुमाते हैं, उसका भी फ्लाइट फेयर करते हैं. Have a very big, expensive cage for them. बहुत ही महंगा तरह एक डब्बा रहता है जिसमें उसको बना सकते हैं. In America, the animal food are more than human food in the supermarket. अमेरिका में कुत्तों का जो भोजन है वो मनुष्य के भोजन से महंगा मिलता है. And everybody, और सब लोग they carry their dogs. कुत्ते के साथ में They have to carry a bag with them. एक बैग भी रखना पड़ता है जो कुत्ते को सैर के लिए जाते हैं. To serve the dog by they're cleaning the stool you pass on the road. जब वो मल त्याग करता है सड़क पर, तो अपने यहाँ से बैग में उठाकर साथ में ले जाता है. In America, it's different. Your dog cannot pass stool in the road. You have to remove it. अमेरिका में ये नियम है कि आपका कुत्ता सड़क पर मल नहीं त्याग कर सकता. So you have to carry material to do that. तो आपको कुछ ले जाना पड़ेगा अपने साथ उसको साफ करने के लिए. That's life. That's the satisfaction. It's enjoyment. People are
doing this happily, but they can't do it for human beings. तो लोग कुत्ते के लिए सुखी होकर कर रहे हैं, लेकिन यही बात जब मनुष्य के लिए करने के लिए आती है तो नहीं करेंगे. We are manufacturing terrible, destructive weapons. इतने घमासान युद्ध करने के लिए वो हथियार बना रहे हैं. For human beings. मनुष्य के लिए, But मानने के लिए. the animals, the dogs, कुत्तों के लिए we are keeping. हम उनको रखेंगे. We are making heavy machines to destroy human beings. इतने सारे यंत्र उपकरण युद्ध के लिए. Civilization. ये इसको सभ्यता कहते हैं आज के समय में. It's not? How you call it? Civilization. इसको सभ्यता कहते हैं आज. That is demonic civilization. तो ये आसुरिक सभ्यता है. One cannot find permanent happiness even on the heavenly planet, which one can attain in the next life by ritualistic ceremonies and sacrifices. Even in material heaven, the living entity is disturbed by rivalry with his equals and envy of those superior to him. And since one's residence in heaven is finished with the exhaustion of pious, fruitive activities, the denizens of heaven are afflicted by fear, anticipating the destruction of their heavenly life. Thus, they resemble kings who, though enviously admired by ordinary citizens, are constantly harassed by enemy kings, and who therefore never gain actual happiness. मनुष्य को स्वर्गलोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता जिसे वह अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकता है. यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी जीव अपने समतुल्य लोगों की प्रतिस्पर्धा से तथा अपने से बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है. क्योंकि पुण्य कर्मों की समाप्ति के साथ ही स्वर्ग का निवास समाप्त हो जाता है. अतएव स्वर्ग के देवतागण अपने स्वर्गिक जीवन के विनाश की आशंका से भयभीत रहते हैं. इस तरह उनकी दशा उन राजाओं की सी रहती है जो सामान्य जनता द्वारा ईर्ष्यावश प्रशंसित होते हैं, किंतु शत्रु राजाओं द्वारा निरंतर सताए जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिलता. Narada Muni went to meet Lord Indra. नारद मुनि एक बार महाराज इंद्र से मिलने गए. See, Sanatana Swami described it. सनातन गोस्वामी बताते हैं. Brihad Bhagavatamrita. ये भागवत. So Narada Muni told Indra, तो नारद मुनि ने इंद्र से कहा, you have the mercy of Lord Krishna. तुम्हें भगवान कृष्ण की कृपा मिली है. Lord Krishna is your brother. भगवान कृष्ण आपके भाई हैं. See him. देखो He's always with you. वो हमेशा आपके साथ है. And और the whole demigod worship you. सभी देवतागण आपके पास हैं. You have all facilities for sanctification. सारी सुख सुविधाएं आपके पास. Certainly, this is the mercy of Krishna upon you. ये तो भगवान की विशेष कृपा है ना तुम्हारे ऊपर. Indra said, no, I'm not the one. इंद्र कहते नहीं नहीं मैं नहीं. I am not. मैं नहीं हूँ. Lord Krishna stays here because of my mother, not because of me. कहते हैं भगवान कृष्ण मेरे साथ रहते हैं मेरे कारण नहीं, मेरी माँ के कारण. You know, when Bali Maharaj drove me away, आपको तो पता है जब बलि महाराज ने मुझे धक्का मार के when I begged him to help me, मैंने भिक्षा मांगी थी मेरी सहायता he करो. said, go and do it yourself. तो उन्होंने कहा जाओ खुद ही आप युद्ध जीत लो, लड़ लो. So he is staying in my neighborhood. It is just a mockery. वो कहते वो मेरे साथ रह रहे हैं लेकिन ये छलावा है. I don't have his mercy. मेरे पास उनकी कृपा नहीं. I'm not the one who has mercy of Krishna. मेरे पास भगवान की कृपा नहीं है. I'm always in anxiety मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ. over different kings, अलग अलग राजाएं, different cities who are struggling to occupy my position. बहुत सारे ऋषि जो मेरे स्थान को हड़पना चाहते I'm हैं. not happy. मैं सुखी I don't have the mercy of the Lord. मुझे भगवान की कृपा नहीं. Even Indra, इंद्र भी the king of heaven, स्वर्ग का राजा
with 33 million demigods as his servant. इतने सारे करोड़ देवतागण की सेवा. Lord Krishna is staying with him in his own planet. भगवान कृष्ण उनके महल में रहते हैं. Any command he gives, कुछ भी वो कहे आदेश. they will obey. वो मानेंगे सब. But he is miserable. लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं. Why will intelligent person go there? एक बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ क्यों जाएगा? Sukadeva Goswami told Parishit Maharaj like that. सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से ऐसा कहा. In the 6th canto. छठे स्कंद. Don't listen to the Vedas because they will misdirect your intelligence towards meaningless things like going to heaven. वेद वाक्य को मत सुनो क्योंकि वो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा और ये जीवन में उद्देश्य देगा कि स्वर्ग जाना चाहिए. Listen to Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम. He is Sukadeva Goswami सुखदेव गोस्वामी and his representatives. और उनके प्रतिनिधि करने वाले लोग. This will give us a ticket. तो ये हमें जाने का टिकट देगा. Go back to God here. भगवत धाम जाने का. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Questions? All right. Hare Krishna. Hare Please Krishna. accept my humble obeisance. Gurudev, my question is that how we can remain always very focused, very happy and very enthusiastic in our spiritual practices. मेरा प्रणाम स्वीकार करते महाराज. मैं जानना चाहती हूँ कि हम हमेशा अपने कृष्ण भक्ति में जीवन में फोकस्ड, उत्साहित कैसे रहें. One way is to have association of those who do things like you. एक तरीका है जो दूसरे भक्त आपकी तरह भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनका संग करना. So if you want to chant, chant with those who love chanting. आप जब करना चाहते हो उनके साथ बैठ के जब करो, जिन्हें जब करना अच्छा लगता है. You want to be enthusiastic? आप उत्साहित रहना चाहते हो, And associate with enthusiastic devotees. उत्साहित भक्तों के साथ रहो. You want to hear? सुनना चाहते हो, Hear from devotees who love hearing. उनसे सुनो जो सुनना पसंद You want to read? पढ़ना चाहते हो, Keep association with those who love reading. जिनको पढ़ना अच्छा लगता है You उनकी want to serve? सेवा करना है. Do it with those who love service, who love service. सेवा करना पसंद करते हो, उनके साथ सेवा करना. So when you see, if you see people doing things you like to do, you'll be eager to do it. तो जब हम लोगों को देखते हैं वो कार्य कर रहे हैं जो हमें करना अच्छा लगता है, तो हम भी उससे करते हैं. That is how you can remain enthusiastic तो इस प्रकार हम उत्साहित रह सकते in our practice. हैं हमारी भक्ति में. And और we should pray for help always. हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए सहायता के लिए. भगवान Always pray for help. सहायता के लिए. Please help me. कृपया मेरी सहायता कीजिए. Help me सहायता दीजिए to become a serious devotee. कि मैं एक गंभीर भक्त बन सकूं. I don't have any qualification to practice bhakti. मेरी कोई योग्यता नहीं भक्ति करने की. So I'm begging you to give me qualification to do bhakti. इसलिए मैं याचना करता हूँ या करती हूँ कि मुझे भक्ति देने की योग्यता दीजिए. Nividana dada sake anugata koro seva adikara diye koro nijadasi. What's the meaning? इसका अर्थ क्या है? What's the meaning? क्या अर्थ है इसका? We sang this morning. हम सुबह गाए थे. What is the meaning? I want to know the meaning. मैं जानना चाहता हूँ इसका मीनिंग, अर्थ क्या है. निवेदन करना होता है तुलसी महारानी से. वन पर्सन रेज है. माता जी बोलिए. ये निवेदन करो, मतलब तुलसी महारानी से निवेदन करते हैं कि हम सखी अनुगत करो, मतलब सखी मतलब भक्तों के संग से अनुगत करते हैं. सेवा अधिकार दिए कोरो निज दासी, मतलब वो हमको सेवा प्रदान करें, मतलब निज भक्तों की सेवा प्रदान करें. ये हम उनसे मतलब तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं. दीन कृष्णा दास से करें, मतलब दिन कृष्ण के बस वही भक्त. है. She is saying we are praying to Tulsi Maharani that please give us service. Okay. Yes. आप कोई बोलना चाहते
free of my please accept my humble obeisance. It means that we are praying to Tulsi Maharani. Please engage me in devotional service. Seva adhikara diya koro diya dasi. Seva adhikara. What does it mean? Please give me the qualifications. Seva adhikara. What is the meaning? You sang this morning and you sing every day for your life. You're going to sing this. So tell me. हमें अपनी निजी सेवा का अधिकार दीजिए. She said, give us qualification to serve. Give us qualification to serve. It's a prayer we're praying. Give us qualification. We don't have the qualification. Give me the qualification to serve you. This is what we are praying. Right? Yes. Yeah. महाराज कह रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें अधिकार दो, योग्यता दो कि हम सेवा कर सके. हमें सेवा करने की योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है, वो योग्यता मांग रहे हैं. And what is the goal? और उसका लक्ष्य क्या है? अपना दास बनाने, मतलब अपना सर्वेंट बनाने. Make me your servant. Give me residence in. Go. Kingdom Goloka. Give me residence in Goloka. तो उसका उद्देश्य है कि मुझे आपका जो स्थान है गोलोक, उसमें आप मुझे निवास दीजिए. Is it not powerful? तो क्या ये एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है? So this should be our consciousness. ये हमारा चेतना होना चाहिए. See, we maintain this consciousness इस चेतना को बनाए रखना चाहिए. by having association. भक्तों के संग में आकर We will get there. हम वहाँ पहुँच जाएंगे. Right? Good question. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Gurudev, for such a beautiful class. हिंदी में बोलूँ आप करो. गुरु महाराज ने कहा कि प्रभुपाद को फॉलो करना है तो हमारे अंदर बहुत करुणा होनी चाहिए. मतलब हम बहुत ईगर होने चाहिए कि हम कैसे लोगों को इस दुख से निकालें, मटीरियल वर्ल्ड के दुख से. लेकिन जो हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी, और हमको दिख रहा है वो अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं, वो हम पे हंसते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं. तो उनको कैसे बाहर निकाला जाए, करना कैसे करें? So her question is, thank you Maharaj for the nice class. Her question is that you said those who want to follow Srila Prabhupada, they should have extreme compassion for others who are suffering. So we have very close relatives and we know that they are suffering like hell, they have a very bad life, but they laugh at us and they say your life is miserable. So now how to have compassion upon them? Just pray for them. केवल उनके लिए प्रार्थना की जा सकती है. There was an incident like that. एक घटना हुई थी ऐसी. When Jesus the Christ was nailed on the cross, जब जीसस ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ाया गया था, there were two thieves, दो चोर थे वहाँ. left and right, who were also nailed on the same cross. उसी क्रॉस पर दो चोरों को भी चढ़ाया गया था, एक लेफ्ट एक दूसरा राइट पर. So the thieves, they told Jesus, तो चोरों ने जीसस को कहा, see, we are thieves. देखो हम तो चोर हैं. So our suffering, we agree that we are suffering because we did nonsense. तो हमें ये दंड मिल रहा है, ठीक है, हमने गलत काम किए ना, उसके लिए मिल रहा है. But we can't understand why you are also suffering like us. हमको नहीं समझ आता आप क्यों चढ़े हो इस पर. आपको किसने? You are hanging here. What did you do that you are hanging here? आप यहाँ लटके हो, आपने क्या किया यहाँ? For we knew why we are here. हम तो जानते हैं यहाँ क्यों हैं. Is it not a waste of time? क्या आपने समय बर्बाद नहीं किया? You say you were worshiping God, but you are hanging here. We didn't worship God. We are hanging here. आप तो भगवान की पूजा करते थे, फिर भी आप लटके हो हमारी तरह. What's the हमने difference? तो पूजा नहीं की. What's the difference? अंतर क्या है? कुछ भी तो You नहीं. didn't enjoy materially, you didn't enjoy spiritually. भौतिक रूप से भी सुखी नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी सुखी नहीं, कहीं के नहीं. At least we have material life. We enjoy our ये हमने existence. भौतिक जीवन को बहुत मजे से जिया. So it's a waste of time. तो ये समय की बर्बादी है. So Jesus looked at them जीसस उनकी तरफ देखते हैं and he told Krishna, और भगवान से बोले, कृष्ण forgive them. उनको क्षमा कर दो. Forgive them. They don't know what they are saying. They don't know. Forgive them.
उनको क्षमा कर दीजिए, वो नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं। So forgive them. इसलिए मैं क्षमा- Tell Krishna, please help them. They are nonsense. Help them. इसलिए कृष्ण को कह सकते हैं कि वो लोग नॉनसेंस उनके साथ हैं। It is a fortune that Krishna has put you in the middle. तो उनका भाग्य है कि भगवान ने उनके बीच में रखा। Krishna will free them कृष्ण उनकी सहायता करें because of the devotion. क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं। We cannot preach philosophy to them. हम उनको प्रचार नहीं कर सकते, We can pray for them. हम प्रार्थना कर सकते हैं। Yes. इस पे एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन कौन लोग हमारे दायरे में हैं जो फ्री हो जाएंगे, मतलब जैसे बहुत क्लोज फैमिली या कितने हमारे। So now there is another question which is coming out. Who all in our circle will get freed from material life because of our? Who in our circle will get free from material life because of our devotional service? All of them. सबके सब All of them. Krishna will help them. कृष्ण सबकी सहायता करेंगे। 3 generations for neophyte devotees. 3 generations. एक कनिष्ठ भक्त है, नया है, उसके लिए भी 3 उसकी पीढ़ियां They will get. उनको लाभ मिलता है। Their liberation is not that they are going back to Godhead. उनको ये मुक्ति नहीं मिलेगी वो भगवत धाम जाएंगे। Their liberation will be promoted to Bhakti. उनको ये मुक्ति मिलेगी भौतिक जीवन से भक्ति में प्रवेश आ जाए। But for pure devotee, लेकिन कोई शुद्ध भक्ति नहीं, their liberation can take them back to God. उनको क्या मुक्ति मिलती है? परिवार के निवासियों को, सदस्यों को, उनको भगवत धाम मिल सकता है। हरि बोल। Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Wish you a happy Ekadasi. Jai.